Okay, Dr. Prakash. So this is your command. Examine the head. Let's take the consent from the patient and now inspect. I'll start with inspection. Inspection, points of the skin, if there are any scar marks, any wasting of the muscles, or gross deformity of the hand. Radial pulse, then on palpation, skin temperature, and pulses, followed by examination of the movements, thumb adduction and abduction, finger adduction and abduction, followed by Froment's test, then the reflex, brachyradialis reflex, and Hoffman's test. In power also the wrist extension and flexion and extension. Okay, anything else? Dr. Prakash, anything else? Yes. I can't remember this now. Okay, anything else? And then the relevant examination map followed by the basis of by initial finding of the examination include the extension of the examination to the upper limb, followed by spinal examination, the neck examination. Okay. Anything else, or are you done with your examination? Other, I think I'm done with the examination. Okay. 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 So these are your. Then I will ask the questions. Okay. Relevant questions. Okay. What question? If there is any history of trauma or previous surgery, and if it is associated with pain. Okay. Okay. So these are your findings. What is your most likely diagnosis or differential on the basis of these findings? A radial nerve injury, ma'am. Radial nerve injury. Okay. Can you tell me the level of radial nerve injury? It's in the forearm. It's likely in the forearm. In the forearm. Okay. Okay. You were saying that I'll ask a question. So there is a history of trauma few months back. Then it's likely due to fracture. Okay. So your Causing the localization compression of the radial nerve at the. your localization of radial nerve injury is at the forearm. Where exactly at the forearm?
Radial tunnel, spiral groove, radial tunnel, ma'am. Radial tunnel. Where is radial tunnel? I'm not quite sure, ma'am. Okay. Okay, so can you tell me the course of radial nerve? Ma'am, I'm not quite sure. Okay. So how will you proceed in this case? I'll proceed with the X-ray of the elbow joint Elbow joint. and Okay. the knob conduction test and EMG. EMG, And NCS. NCB and Okay. CB. So, If there is any yes. So, you said X-ray of elbow, but on elbow you saw there's a fracture, so you got an X-ray of the arm as well, of the humerus. So, what does it show? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's a humeral fracture in this fracture of the right humerus, which may have injury of radial nerve in the spiral group. Okay. And this MRI of the T1 and T2 societal MRI of the cervical spine and axial section does not show any significant anomalies. Okay. So the string is a peripheral cause of Okay. So deformity. you now conclude that your diagnosis is radial nerve injury. Radial nerve injury at Spiral groove. upper arm. Okay. Okay. Spiral groove. Yes, ma'am. Okay. So this patient presented with the symptoms and signs you saw, and the orthopedic surgeon then fixated it. He did kneeling or whatsoever they do, but still the patient has wrist drop. It has been 6 months. Now, how will you manage this patient? I will first do EMG and NCV in order to see whether there is a reinnervation potential or not. Or there are, if any, denervation potential characterized by loss of amplitude and sharp waves. If there is ongoing denervation potential, the patient will likely need the repair of the exploration, followed by either knot graft, then proceed. Okay. So, what is Wallerian degeneration? Uh, in Ectodermatosis and neurodemesis, on the distal end of the nerve, there is involution of the distal end, called as a Wallerian degeneration. Okay. How will you classify peripheral nerve injuries? Peripheral nerve injuries, the Sunderland and classification. One classifies it into 5 groups and one into 3. The first being neuropraxia, second neurodemesis, agenodemesis, and third is neurodemesis. In first group, there is no discontinuity of the nerve, there is just conduction deficit. In type 2, in agenodemesis, there is effect in the epineurium or perineurium only, with the continuity is maintained. However, in neurodemesis, there is complete transection of the nerve. Okay. In Sunderland classification, they are put in 5 groups. Okay. And what are those 5 groups? One corresponds to a neuropraxia, is the continuous maintained because conduction is unaffected, and group 2, 3, and 4 corresponds to agenodemesis, depending on covering of the knob that is injured, maybe endoneurium or the epineurium, and group 5 corresponds to agenodemesis, the complete transition of the knob. Okay. How would you differentiate
a radial nerve injury at the arm versus a radial nerve injury in the forearm on examination? Sensory sparing of the Sparing off, yes. uh, lateral cutaneous branch. Lateral calcaneal branch. No, cutaneous Okay. So it will be spared in injury in the forearm. where the branches to the triceps are given in Sorry, from ma'am. at what level branches to the triceps muscle are given off by the radial nerve? Does it Sure. occur before the spiral groove or after the spiral groove? I'm not sure. Okay, okay. What are the different options for nerve repair? Grafts Yes. uh, or uh, or the knob tendon or the transfer Okay. or the knockdown. And sometimes if it's close vicinity, a direct repair also end-to-end anastomosis. Okay. Okay. If this patient complains of neck pain as well, so how would you differentiate a radiculopathy from any peripheral neuropathy? I mean, as in radial nerve or ulnar nerve palsy. In cervical radiculopathy, the pain is in the dermatum, knob root dermatum. In Okay. hyoid peripheral, it's limited to that knob root knob only. Uh, Okay. Okay, so Dr. Prakash, you were good. Okay. And covered most almost everything. But once you are examining the hand, okay, first of all, you have to do the limited examination. Examination was hand was also covered in the previous, I think in module 2, when we are discussing about the ulnar nerve injury. Okay, so whenever you are asked to examine the hand, first of all, limit your examination to the hand. You have to inspect and palpate, right? Inspect hand for deformity. Like in this patient, आपको inspection पे ही बताना था कि there is an obvious wrist drop, ठीक है, on inspection. उसके बाद जो है उसी पे आपको if there is any wasting like any थिनार वेस्टिंग हाइपोथिनार वेस्टिंग कभी कभी जो कार्पल टनल में होती है वो कोई प्रीवियस स्कार कोई पिगमेंटेशन ये सारी चीजें आपको पता है ठीक है पेल्पेशन जब आप करोगे हैंड का आइसोलेटेड व्हेन देयर इज हैंड एग्जामिनेशन तो आप हैंड की सारी मसल्स फिंगर्स की करोगे वैसे जब अपर लिम्ब की एग्जामिनेशन आती है तो आप ज्यादातर सिर्फ ग्रिप चेक कर लो या जो है वो थंब ऑपोजिशन चेक कर लो दैट्स मोर देन इनफ ठीक है लेकिन जब आपके पास हैंड की एग्जामिनेशन आती है तो आपको ऑल द मसल्स ऑफ द हैंड ऑल द जो है एडक्टर्स एबडक्टर्स ठीक है थंब की सारी मूवमेंट्स आपको देखनी होती हैं फिंगर एक्सटेंसर्स फ्लेक्सर्स ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं ठीक है अलोंग विद दैट आप हॉफमैन टिनेल साइन ठीक है और फ्रोमेंट साइन भी करते हो ठीक है अच्छा सेंसरी एग्जाम में आप वही देखते हो जो हाथ में डर्मेटोम्स आते हैं 3 ठीक है अलोंग विथ द डॉर्सम पे जो है आप सेंसरी चेक करोगे ठीक अच्छा इसके अलावा जब आप एग्जामिनेशन हैंड का कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आप रेलिवेंट एग्जाम पे जाते हो रेलिवेंट एग्जाम पे आपको क्या करना होता है आपको नेक में स्पर्लिंग साइन देखनी होगी ठीक है क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करना है वेदर देयर इज रेडिकुलोपैथी ठीक है या ये कोई पेरिफेरल नर्व का मसला है ठीक दूसरा आप स्पर्लिंग के साथ जो है वही जो है आपका हॉफमैन वगैरह तो आप उसी में कर लेते हो लेकिन आप ऑपोजिट अपर लिम्ब भी देखोगे कुछ और नहीं तो ऑपोजिट साइड की ग्रिप चेक कर लो ठीक है अच्छा इसके अलावा जब आप करते हो
हैंड का एग्जामिनेशन, और अगर आपको कोई भी हैंड पे कोई मिल नहीं रहा, कोई स्कार या कुछ, तो क्या पता उसको अपर कोई आर्म में कोई स्कार आपको नजर आए। ठीक है, जैसे इस पेशेंट में आपको आर्म की इंस्पेक्शन भी जरूरी थी, क्योंकि वहां पे आपको कोई स्कार मार्क या प्रीवियस जो उसको ह्यूमरस का फ्रैक्चर था उसका जो है कोई जो है आपको उसको साइंस मिल सकते थे। तो ये चीजें इस हिसाब से जरूरी हैं। दूसरा, जो आप क्वेश्चंस पूछते हो उसमें आपको यही चीज पूछनी होती है कि कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री तो नहीं है, और दूसरा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की कोई हिस्ट्री तो नहीं है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें आप जरूर पूछते हो। अब इसमें जो चीजें हैं, यही चीज मैंने बता दी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ट्रॉमा, स्कार, ये सारा। अच्छा, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स भी देखना होता है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपकी रेडियल नर्व जो है, एनाटमिकल जो रेडियल कैनाल आप कह रहे थे प्रकाश, देयर इज नो रेडियल कैनाल। ठीक है, देयर इज एनाटमिकल स्नफ बॉक्स जहां पे आपकी रेडियल नर्व और रेडियल आर्टरी होती है इन द फर्स्ट वेब स्पेस। अच्छा, इसके साथ जो है आप क्योंकि आप रेडियल नर्व कर रहे हो, तो हैंड की एग्जामिनेशन में न सिर्फ रेडियल नर्व बल्कि दूसरी नर्व्स भी आप एग्जामिन कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने टिनेल साइन किया, ठीक है, तो उसमें आप मीडियन नर्व भी देख रहे हो, या थीनार हाइपोथीनार वेस्टिंग के हिसाब से आपने मीडियन नर्व देख ली, थीनार की, सॉरी नॉट हाइपोथीनार, अल्नर भी आप देखोगे। तो इससे जो है वो आपको एक दो चीजें जो है वो उससे रूल आउट होती जाएंगी। दूसरा, एडसन टेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि इसमें आप एडसन टेस्ट अगर कर लो, स्पर्लिंग जब कर रहे हो तो उसी के साथ अगर आप एडसन टेस्ट कर लो तो वो भी एसोसिएटेड में अच्छा होता है। अब इसमें जो मैं बता रही थी बात, पूछ रही थी बल्कि, कि हाउ टू डिफरेंशिएट एट इन द रेडियल नर्व इंजरी एट द फोर आर्म वर्सेस द आर्म, वो ये है कि जो ट्राइसेप्स की सप्लाई है, ठीक है, मतलब जो आपकी एल्बो एक्सटेंशन है, ठीक है, दोज ब्रांचेस आर गिवन बाय द रेडियल नर्व proximal टू द स्पाइरल ग्रूव। ठीक है, तो स्पाइरल ग्रूव से जब प्रॉक्सिमल इंजरी होगी तो देयर विल बी वीकनेस ऑफ द एल्बो एक्सटेंशन एज वेल। बट इफ द इंजरी इज डिस्टल टू द स्पाइरल ग्रूव, तो वो ऑलरेडी ब्रांचेस दे चुकी होती है ट्राइसेप्स को, तो देयर विल बी नो वीकनेस और सटल वीकनेस ऑफ ट्राइसेप्स। ठीक है, बाकी रिस्ट ड्रॉप होगा, रिस्ट के जो एक्सटेंसर्स हैं वो वीक होंगे। सो यही लिखा हुआ है, मोस्ट कॉमन लोकेशन स्पाइरल ग्रूव ही होता है। ठीक है, तो इसमें वीकनेस ऑफ एक्सटेंसर मसल डिस्टल टू एल्बो, ट्राइसेप्स इज यूजुअली स्पेयर्ड। ठीक है, सेंसरी लोअर आर्म और लोअर आर्म और पोस्टीरियर फोर आर्म पे जाता है। सो दिस इज डॉक्टर प्रकाश, दिस वाज द डिफरेंस आई वाज आस्किंग। ठीक है, यू डिसाइड ऑन दिस। बात आती है जब रेडियल नर्व की पाथवे की, तो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, रेडियल नर्व का पाथवे जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, ओरिजिन उसका कहाँ है, लोअर प्लेक्सस जो आपका लोअर ट्रंक होता है वो पोस्टीरियर कॉर्ड जो होता है डिवाइड्स इनटू द एक्सिलरी एंड द रेडियल नर्व। फिर उसके बाद रेडियल नर्व जो है यहाँ से आते हुए ब्रांचेस देती है टू द डेल्टोइड, टीरीज माइनर, और फिर जो है, सॉरी दिस इज एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व जो है फिर मिड आर्म में आके ट्राइसेप्स को सप्लाई करती है। एंड यहाँ पे जो स्पाइरल ग्रूव से देके आ रही है, तो उससे पहले ही ट्राइसेप्स को ब्रांचेस दे चुकी है। फिर जब यहाँ स्पाइरल ग्रूव से कर्व करके आती है, देन इट गिव्स सप्लाई टू द एक्सटेंसर्स ऑफ द फोर आर्म। यहाँ पे एग्जैक्टली यही है। ठीक है, रेडियल नर्व इन द स्पाइरल ग्रूव, लेकिन उससे पहले ही ये ट्राइसेप्स को ब्रांचेस दे चुकी होती है। So that's why if the lesion, yeah, if the injury is distal to the spiral groove, then the triceps is spared. ठीक है, ये वही चीजें हैं जो मैंने बताई हैं, proximal to the elbow and distal to the elbow. Proximal to the elbow, it leads to deficit in wrist extension, finger extension, thumb abduction, and sensation in the superficial radial nerve distribution. एंड इफ इट इज डिस्टल टू द एल्बो, तो वो सारी ये वाले मोटर डेफिसिट्स देगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ जो है यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट। अच्छा, इंजरीज जो होती हैं रेडियल ग्रूव में, उसके जो कॉजेज हैं वो फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस सेटेडाइट पेल्जी, या ऑपरेटिंग टेबल पे आइट्रोजेनिक जो है वो पोजिशनल मसले होते हैं जो, ठीक है, इसके रिस्ट ड्रॉप के। तो इसमें जो है आपको क्या होता है, इट इज बियॉन्ड द ओरिजिन ऑफ द नर्व टू ट्राइसेप्स, इसी वजह से देयर इज रिस्ट ड्रॉप, बट देयर इज नो प्रॉब्लम इन एक्सटेंशन ऑफ द फोर आर्म। ठीक है, अच्छा, पोस्टीरियर इंट्रोशस जो नर्व होती है
उसकी इंजरी में इट इज अ प्योर मोटर नर्व, ठीक है। तो इट इज अ मोटर नर्व, इट इज बेसिकली इट इज अ डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, और मोटर नर्व होती है। तो यहाँ पे कोई भी सेंसरी लॉस नहीं होता, कोई रिस्ट ड्रॉप नहीं होता, इसमें सिर्फ डिजिट्स की एक्सटेंशन जाती है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल जो है वो पोस्टीरियर एंट्रोशस नर्व में इट इज आल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ रेडियल नर्व इंजरीज, बट इसमें रिस्ट ड्रॉप नहीं होता, सेंसरी लॉस नहीं होता, जस्ट देयर इज एक्सटेंसर्स आर वीक, ठीक है। अच्छा, प्रॉक्सिमल एंड प्रॉक्सिमल फोर आर्म में होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है रिस्ट एक्सटेंशन इसमें लिखा हुआ है, हाई रेडियल नर्व पैल्सी और लो रेडियल नर्व पैल्सी के डिफरेंसेस वो मैंने अभी बता दिए थे, ठीक है। सेडॉन एंड सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन जो होती है उसमें वो बिल्कुल डॉक्टर प्रकाश ने सही बताई कि किस तरह आप क्लासिफाई करते हो उसको इनटू 5 टाइप्स एंड 3 टाइप्स। अब इसमें जो है ये पूछते हैं कि कौन कौन सी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, वो आप डॉक्टर प्रकाश बिल्कुल सही बता रहे थे। इसको मैनेज आप कैसे करते हो, जब पिछली दफा मैंने बताया था, जो टॉपिक डिस्कस हुआ था पेरिफेरल नर्व इंजरी का, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी फुट ड्रॉप में। तो ये सारे वही, इसमें भी ऑप्शंस सारे अप्लाई होते हैं कि आप क्या करोगे, ठीक है। ईएमजी एनसीएस करोगे 3 वीक्स के बाद, और इसमें इस पेशेंट में हिस्ट्री 6 मंथ्स की थी, तो आप 6 मंथ्स के बाद भी ईएमजी एनसीएस की बेसिस पे ही डिसाइड करोगे कि उसमें डी मतलब उसके साइंस हैं या नहीं, डी माइलिनेशन के या डीजनरेशन के, सॉरी। पॉजिटिव शार्प वेव्स, फिब्रिलेशन पोटेंशियल्स, सेम चीज, वही प्रोटोकॉल है कि अगर फ्रेश लेसरेटेड वुंड है तो आप विद इन 24 to 48 आवर्स रिपेयर करोगे, अदरवाइज यू हैव टू वेट, ठीक है। इंडिकेशंस ऑफ लेट सर्जरी सेम ही है, ये सेम वो 2-3 स्लाइड्स हैं जो मैंने कॉमन पेरोनल नर्व इंजरी से ली है। डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से, एंड टू एंड, ठीक है, नर्व ग्राफ्ट्स, नर्व ट्रांसफर्स एंड न्यूरोलाइसिस, ठीक। अच्छा, जब रेडियल नर्व को जब आप करते हो, डिपेंड करता है प्रॉक्सिमल रेडियल नर्व की इंजरी है या डिस्टल की है। प्रॉक्सिमल रेडियल नर्व को आप एक्सपोज करना चाहते हैं तो आप स्पाइरल ग्रूव से इसको कर सकते हैं, पोस्टीरियर ह्यूमरल जो है वो एस्पेक्ट से। और अगर डिस्टली जाते हैं तो फिर उसके फोर आर्म में, जहाँ पे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स या जो है सुपिनेटर जो होता है, जहाँ पे टू हेड्स ऑफ द सुपिनेटर के बीच में जाती है रेडियल नर्व, वहां से एक्सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ना कहाँ से है, ये शॉर्ट केस में आ सकता है, तो इसलिए 2-3 मैंने जो है शॉर्ट लिस्ट करके रखी है केस स्टडीज, तो इसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, यहाँ से इन चीजों से आप पढ़ सकते हो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, डॉक्टर प्रकाश? नो मैम, थैंक यू। कोई मैम पूछना अपने हो? जो हाई रेडियल और लो रेडियल का फर्क बताया है, जी उसमें ये क्या करें कि हाई रेडियल और लो रेडियल का फर्क बताया जो आपने, उसमें इस तरह है कि अगर फिंगर उसकी क्या नाम है इसके फोरआर्म की एक्सटेंशन भी जाएगी तो हाई रेडियल है, और अगर सिर्फ एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स पे सेंसरी नेसेसिटेशन नहीं है तो फिर लो रेडियल जाएगी। डॉक्टर हरुण, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, जी अब जी आ रही मैम? जी जी, अब आ रही है, हाँ पूछे। तो इसमें मैं आप जो डिफरेंस बताए थे हाई रेडियल का और लो रेडियल का, जी जी। वो हम एग्जामिनेशन पे इस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि अगर फोर आर्म की एक्सटेंशन भी जा रही है तो हाई रेडियल है, और अगर सिर्फ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स पे सेंसेशन नहीं है तो लो रेडियल है। नहीं, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का नहीं, आपको जो है अगर सिर्फ रिस्ट एक्सटेंशन वीक है और फिंगर एक्सटेंशन वीक है, लेकिन एल्बो एक्सटेंशन सही है, तो इट मींस इट इज डिस्टल टू द स्पाइरल ग्रूव, ये लो लो ठीक है। रेडियल। हाँ, और अगर ट्राइसेप्स की भी वीकनेस है, मतलब रिस्ट ड्रॉप भी है, फिंगर ड्रॉप भी है, और जो है एल्बो भी वो है एक्सटेंड नहीं हो रही, तो इट इज प्रॉक्सिमल टू द स्पाइरल ग्रूव, हाँ, ये है, ठीक हो, ठीक है। और कुछ ठीक हो, पूछना हो? ठीक है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट शॉर्ट केस में कौन करेगा वॉलंटियर? एनीवन फॉर शॉर्ट केस 2? I'm here if anyone not present. चलें, ठीक है, डॉक्टर आ रहा हूँ, ओके। एग्जामिन द लोअर 6 cranial nerves, जस्ट आप जल्दी जल्दी से बताओ कि हाउ विल यू एग्जामिन लोअर 6 cranial nerves?
Okay, first of all, ma'am, I will take the consent and introduction to the patient. Then I will start to the first of all to the seventh grade. Now I will see the his facial. If there is any facial deviation, and then I will see the tongue deviation, tongue, and then I will see the eyes to close. I said patient to close his eyes, and then I will see the forehead. And then I will ask the examiner to. I will want to check the anterior two-third of the for taste. If examiner said, then I will check that one. Then I will check the ma'am eighth grade now. First of all, do Renes and Weber, and then I will first I will do whispering to check the patency of both ears, and then I will do the Renes and Weber. And then ma'am, the second part is also which is balance, which I have to ask from the examiner to check for the eighth nerve. And then ma'am, I will check the ninth grade nerve, ninth and tenth both for cuff reflex and voice of the patient. And then I will check the uvula, and I will for both sides, right and left uvula, to say the patient. I will to give the command to patient to say ah, and then I will check the parapharyngeal pillars to check the gag reflex. And then after this, I will ma'am check 11th grade nerves and I will ask patient to say shrug his shoulders, and then ma'am and this spinal accessory nerve. And then ma'am, I will check the tongue for the 12th grade nerve, inspection of tongue, and then I will say patient to move in his mouth to right and left the tongue, and then I will check by pressing his chin from outside to check the power of the 12th grade nerve, of the power of the tongue. And in ninth, ma'am, one more is posterior one third for taste. Okay. So, any relevant examination? Yes, ma'am. Relevant examination, I will ask to examiner to check the cerebellar examination. Okay. Anything else? If any sign, then I will move toward like cervical, upper limb. Okay. And anything else? Anything? Anything, if there's any finding, then I will check the long track sign and fundoscopy. Okay, fundoscopy. Okay. Any question that you Yes. want to ask from the patient? Ma'am, first of all, ma'am, previous because this lower system, ma'am, previous surgery for any patient or any other. Okay. Trauma or infection. We ask infection or trauma or infection. Okay. So these are the findings of your patient. Okay, ma'am. Okay. So, what are you suspecting based on these findings? Which nerves are involved? Ma'am, lower cranial nerves mainly, ma'am, 9th, 10th, and the gate have been cerebral 8th also, 8th, 9th, 10th. 8th, And 10th. yes, ma'am, 8th, 9th, 10th. Why 8th? Sorry, ma'am, I think balance the gate is mainly, ma'am, 9th, 10th, mainly 9th, 10th, and 9th, 7th. 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 Why 7th? Yes, ma'am. Ma'am, tongue deviation. Tongue deviation 7th करवाती है? Ma'am, facial and also Which nerve facial and supplies 12th, ma'am. the uh, tongue muscles? Ma'am, 12th cranial nerve. So in this case, there is involvement of 7th nerve or 12th nerve? Ma'am, I have to check about is this upper motor neuron or lower motor neuron type? No, If there is only tongue. 7th nerve, in a sense, that there is normal eye closure, normal, you can see normal nasolabial folds. Okay, so yes, in this scenario, 12th, ma'am, 12th. 12th nerve. Which side 12th nerve? Right or left? No, ma'am, left. Left. Why?
Ma'am, because the 12th nerve obeys the same side, which where it deviates same side where the ligand present. Okay, okay. So on the basis of these findings, where is your localization? Ma'am, in infantile most probably cerebellum. Cerebellum, just the cerebellum? Ma'am, also towards the in the cervical also because loss of hand grip, a weak hand grip. Okay. And why there's involvement of the lobe of four cranial nerves if it is just cerebellum? Ma'am, maybe there is a lesion which extending to which is originate from the cerebellum and involving cervical region also. So what can be your differential? Ma'am, my first differential is any ma'am craniovertebral that's a CVJ and lesion. Okay. What kind of CVJ lesion? Ma'am, first differential is carry, ma'am, Okay. and other maybe basilar imagination or a foramen magnum angioma lesion. Okay. Okay. So you will broadly say कि congenital neoplastic, तो Okay, ma'am. congenital में आपको Congenital. कैरी भी आ गया, बीआई भी आ गया, नियोप्लास्टिक में आपको मेनिंजोमा आ गया, ठीक है, तो Okay, ma'am. ये आपका ठीक है, सही है. So how will you proceed in this case? Ma'am, first of all, I will do radiology, ma'am. MRI cervical, MRI brain plane with cervical spine, IV contrast. Okay, okay. So this is your MRI. Please read the scan. These are the ma'am, MRI brain plane with contrast of the same patient showing axial and sagittal post-contrast lesions. And ma'am, there is a lesion in the left in the right foramen magnum, which is extending to the brainstem, which is also compressing the brainstem, and ma'am, involving the uh, uh, this is involving this vessel. Which vessel? Uh, ma'am, This one. yes, this one, ma'am. Okay, This which is one. this vessel? This is midline, so maybe vertebral artery, ma'am. Okay, so, and this one? Which one, ma'am? This one. I can't see your cursor, ma'am. One minute. This one. No, this is ma'am carotid. Okay, this is carotid. And this is? Yes, ma'am. Ma'am, this is, I'm not sure. This is basilar or vertebral. This. Midline maybe basilar, ma'am. Okay. Basilar maybe. Okay, so now on the basis of this radiology, what is your diagnosis? Ma'am, on the basis of radiology, my first diagnosis is foramen magnum, ma'am, meningioma. Okay. So how will you proceed in this patient? Because what will you do? um, ma'am, I will tell regarding I will tell the patient regarding the disease, and then sir, and I will tell him that there is no medical management for this. Medical management, although for steroid or and mannitol, Any but other this is investigation? for short. Any other investigation? Ma'am, CT craniocervical junction. Why? Ma'am, to see the pathology, to rule out any other that if there is any basal invagination नहीं, वो तो इस पे or भी नजर anything. आएगी आपको एमआरआई पे है बेसिल Ma'am, to इन्वेजिनेशन see है. the height. Yes, no, ma'am. Yes, ma'am. There is basal invagination.
बेसलर इन्वेजिनेशन है, ठीक है। Yes, ma'am. And to see the hydro. हाइड्रो तो इस पे भी आपको नजर आ रहा है कि नहीं है, यहाँ पे Hmm. टेम्पोरल क्लियर नहीं है इतना, लेकिन यहाँ पे टेम्पोरल हॉर्न्स भी डायलेटेड नहीं है, थर्ड वेंट्रिकल भी ऐसा लग नहीं रहा, ब्रेन तो रिलैक्स लग रहा है, ठीक है। Yes, ठीक है, Dr. Mujahid gave me hint, ma'am. NGO. एनजियो। To see the vessels, डॉक्टर मुजाहिद vascular. गेव To यू, see the, डॉक्टर मुजाहिद गेव यू हिंट, यस। ओके, सो एनजियो, ओके, व्हाई एनजियो? ma'am, to see the vascularity, to see the involvement of vessels, ma'am. व्हिच वेसल? Ma'am, this basilar and carotid. कैरोटिड यहाँ कहाँ आ गई? मैम ठीक है, कैरोटिड वो जो बेसिलर, आपने दूसरी पूछी थी वो। बेसिलर तो ठीक है, ठीक है, बेसिलर का आई कैन एक्सेप्ट। और अभी आपने इस आर्टरी का नाम बताया था इसका। वर्टिब्रल मैम। अच्छा, ठीक है, तो वर्टिब्रल की मुझे सेगमेंट्स बता सकते हैं आप? वर्टिब्रल के सेगमेंट्स मैम, एक तो मैम उससे पाइका बनती है। नो नो, आई एम आस्किंग अबाउट सेगमेंट्स ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, नॉट ब्रांचेस। सेगमेंट्स अभी नहीं पता। सेगमेंट्स मैम आई कांट रिमेंबर। Okay, okay, so how will you approach in this patient? You have counseled her, and she is willing for surgery. Now, how will you proceed? How will you approach? Ma'am, there are three procedures. Ma'am, one is posterior, posterior lateral, and for lateral approach. Okay, so what But approach ma'am, will I you have seen. Ma'am, I will go for the posterior, ma'am, because I have seen only posterior layer in my unit. posterior? Which approach? Suboccipital. Posterior suboccipital, yes, ma'am. Okay, so tell me the steps. Ma'am, first of all, I will give the incision. I will mark the anion, and then anion to C2, and set the skin incision. And then I will do the subperiosteal dissection. Then I will start connectomy just medial to the midline. And then, sir, and most probably it's a three into three. But in this foramen magnum, I will do 5 into 5 connectomy. 5 into 5 centimeter connectomy, and I will decompress the foramen magnum, and I will remove the arch of C1. And after this, then I will the rotary. I will do the rotary curvilinear in CN. Sorry, Y shape in CN. And then, ma'am, I will if the occipital sinus came, then I will ligate the occipital sinus. And then, ma'am, I will identify. I will start corticotomy. And then, ma'am, I will first of all I will coagulate, and the 4 Ds of meningioma, like I will do the devascularization, and then, ma'am, de-dress. Then, ma'am, I will do dissection. I will make the plane, and then, ma'am, I will internal debulking, and then I will excise as much as safe, and I will use neuromonitoring. I will use a microscope, and I will also attach SCP, SCP, and MEP potential, motor evoked potential, and I will also take a neuromonitoring, and then I will and I will also use the CUSA to separate because it is a vascular tumor. And then after this, ma'am, I will take good hemostasis, chemical as well as mechanical hemostasis, and then I will do and one safety bar hole I will do in the freezer, and I will put the EVD closed circuit EVD, but I will close, and I will get after hemostasis and the closure, and I will do expansion duroplasty for the pericranium or and any facial autograft, and then I will and after closing, and then I will put a drain also, and I will tell my juniors or my assistant that check the GCS of the patient, and
if there is any hydro, then drain the CSF via EVD. Or I will put EVD closed circuit EVD at high pressure of 20 centimeter of water to drain the CSF. ओके, ठीक है डॉक्टर हारून, यू आर वेरी गुड। ठीक है, पहले से मैं बहुत इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ, यू वेरी गुड। ठीक है, अब इसमें यही होती है Yes, ma'am. फोरामिन मैग्नम में आपसे जो डिफरेंशियल पूछते हैं, ठीक है, तो उसमें आप यही बोलते हो कि भाई कुछ जो है वो नियोप्लास्टिक लीजन्स होते हैं, ठीक है, और नॉन नियोप्लास्टिक में आपकी वो बेसिलर इमेजिनेशन और ये क्यारी सारी आ जाती है। ठीक है, जो नियोप्लास्टिक लीजन्स हैं Yes, उसमें मोस्ट कॉमन फोरामिन मैग्नम मेनिंजोमा होता है। इसके अलावा यहाँ पे कॉर्डोमा भी हो सकता है, ठीक है, क्लाइवल कॉर्डोमा, उसमें भी यही yes, ma'am. प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो आप दूसरा अगर नियोप्लास्टिक आपको बोलना है तो आप क्लाइवल कॉर्डोमा बोल सकते हो। ठीक, दूसरा कभी कभी ब्रेन स्टेम के जो ट्यूमर्स होते हैं, ब्रेन स्टेम ग्लायोमास, कभी कभी वो एक्सटेंड करते हैं, इवन एपेंडाइमोमा और कभी कभी मेडुलोब्लास्टोमा भी इस तरह से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं जब वो एक्सटेंड, स्पेशली एपेंडाइमोमा जब Yes, एक्सटेंड ma'am. करता है नीचे। ठीक है, तो ये दो तीन डिफरेंशियल आपको आने Yes, चाहिए। अच्छा, स्टेप्स में जब आप बात करते हो फोरामिन मैग्नम की तो आपको फार लेटरल, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग फार लेटरल ही करते हो। ठीक है, अब जैसे ये पेशेंट था, इसमें भी जो ट्यूमर है इट इज एंटीरियर लेटरल, राइट, तो आपको फार mm-hmm. लेटरल अप्रोच से ये एक साइड अच्छी आपको जो है मिल जाएगी। ठीक है, इसमें ज्यादातर फार लेटरल ही करते हैं। फार लेटरल की इंसिशन आपको सारी आनी चाहिए। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह से हॉकी स्टिक इंसिशन होती है। सबऑक्सीपिटल ट्रायंगल की बाउंड्रीज आपको पता होनी चाहिए। सबऑक्सीपिटल ट्रायंगल बेसिकली जब आप स्किन फ्लैप हटाते हो, ठीक है, उसके बाद कुछ सुपरफिशियल मसल्स आती हैं, कुछ डीप मसल्स आती हैं और डीपेस्ट मसल्स आती हैं। तीन ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं। ठीक है, सुपरफिशियल मसल्स में Mm-hmm. जो है अपना स्प्लीनियस कैपिटस और ये सारी दो तीन चीजें आती हैं। ठीक है, फिर डीपर मसल्स हैं जिसमें स्टेनोक्लाइडोमेस्टोइड और ट्रिपीजियस आती है शायद। ठीक, उसके बाद जो डीपेस्ट होती हैं उसमें आपका सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल आता है। सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल क्या है? दिस स्ट्रक्चर, दिस कौन इज सा स्ट्रक्चर मैम? दिस इज सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल। ठीक है, इट इज बाउंडेड बाय रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर, superior oblique and inferior oblique. The contents of suboccipital triangle are vertebral artery और C2 का गैंग्लियन होता है। ठीक है, C2 जो रूट होती है वो। ठीक है, तो इसमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप जब C1 की लिमिनेक्टोमी करते हो, पोस्टीरियर आर्च की, पोस्टीरियर आर्च को निकालते हो, तो उसमें आपको वर्टिब्रल आर्टरी का खास ख्याल करना होता है। तो आप सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करोगे तो आप वर्टिब्रल आर्टरी को जो है वो इजीली जो है वो आप कर सकते हो आइडेंटिफाई। तो इसी वजह से सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल की ये इंपॉर्टेंस होती है। दूसरा ये कि वर्टिब्रल आर्टरी को तो आप मोबिलाइज करते हो या जो है उसको आइडेंटिफाई करते हो, यहाँ पे जो C2 का गैंग्लियन होता है कभी कभी उसको आप कर सकते हो, सेक्रीफाइस कर सकते हो अगर आपके रास्ते में आ रहा है तो। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपने सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल की मसल्स हटा दी है। ठीक है, तो आपको ये C1 की पोस्टीरियर आर्च नजर आ रही है, वर्टिब्रल आर्टरी नजर आ रही है। अब वर्टिब्रल आर्टरी के जो सेगमेंट्स में पूछ रही थी, जब आपसे फार लेटरल अप्रोच की बात होती है तो आपसे वर्टिब्रल आर्टरी के सेगमेंट्स जरूर पूछे जाते हैं। वर्टिब्रल आर्टरी के सेगमेंट्स चार होते हैं। एक प्री फोरेमिनल, ठीक है, फोरेमिनल, प्री फोरेमिनल को बेसिकली सर्वाइकल सेगमेंट कहते हैं। फिर दूसरा सेगमेंट जो V2 है वो फोरेमिनल होता है। ठीक है, V3 एक्स्ट्रा ड्यूरल, V4 इंट्राड्यूरल, इजी है। प्री फोरेमिनल, फोरेमिनल, एक्स्ट्रा ड्यूरल, इंट्राड्यूरल, तो इस तरह से याद रखेंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, तो वर्टिब्रल आर्टरी जो है इसका कोर्स आपको पता हो कि ये किस तरह से पोस्टीरियर आर्च के ऊपर से कर्व करती है, फिर ये अंदर वापस जाती है ड्यूरा को पियर्स करके अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये सब ऑक्सीपिटल जो है अपना फार लेटरल के जो है। अच्छा, जब आपने ये चीजें सारी जो है आपने वर्टिब्रल आर्टरी को मोबिलाइज कर दिया, आपने जो है वो बोनी काम सारा कर लिया, तो जो आप ड्यूरा खोलते हो इट इज लेजी एस शेप या लेजी जे शेप आपकी ड्यूरा खुलती है। ठीक है, उसके बाद ये एक और पिक्चर है जिसमें सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल दिखाया है, वही चीजें इंफीरियर ओब्लिक, सुपीरियर ओब्लिक और रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर। ठीक है,
और इसके अंदर जो है ये आपका C2 का गैंग्लियन होता है और वर्टिब्रल आर्टरी होती है। ठीक, अब इसमें जो फोरामेन मैग्नम मेनिंजियोमा है उसकी जो बेसिक चीजें हैं सारी, बल्कि सारी तो नहीं, कुछ बेसिक चीजें वो ग्रीनबर्ग में हैं। जो मेनिंजियोमास हैं वो हमें सारे कवर करने हैं फ्रॉम अल-मेफ्ती। ठीक है, अल-मेफ्ती की बात अब इसलिए आई है क्योंकि मेनिंजियोमा का नाम आया है। जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा हमारा वो मेनिंजियोमास पे ही होगा, मेनिंजियोमास एंड ग्लायोमा। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ भी शेयर कर दीजिएगा काइंडली। पीडीएफ, हाँ ठीक है। तो अल मेफ्ती जो है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर मेनिंजियोमास। फोरामेन मैग्नम मेनिंजियोमा उसमें बहुत अच्छा लिखा है, चैप्टर 31। ठीक है, मैं ग्रुप पे भेज भी देती हूँ। और फार लेटरल अप्रोच जो मैंने ये सारी पिक्चर्स लगाई थी, ये वाली, ये फार लेटरल अप्रोच बहुत अच्छा लिखा हुआ है इन ऑपरेटिव क्रेनियल न्यूरोसर्जरी चैप्टर 28। ठीक है, तो ये दो चीजें भी अगर आप लोगों ने पढ़ ली, ग्रीनबर्ग में बहुत लिमिटेड लिखा हुआ है, मतलब मेनिंजोमा का एक ही चैप्टर है उसमें सारे मेनिंजोमास और उसने एक ही साथ बताए, तो वो बहुत लिमिटेड है, उस पर रिलाई नहीं करना। मेनिंजोमास के लिए आपको अल्मेफ्ती पढ़नी जरूरी है। ठीक है, तो ये शॉर्ट केसेस में नहीं आता, ज्यादातर फोरामेन मैग्नम मेनिंजोमा होता है तो वो लॉन्ग केस में आता है। मेरा आज का इरादा यही था कि मैं इसको शॉर्ट केस नहीं बल्कि लॉन्ग केस रखूं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट केस में किया। लेकिन इसको आप लोगों ने पढ़ना है तो आपको लॉन्ग केस के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन डॉक्टर हारून या किसी और को कुछ पूछना हो? ग्रुप पे किसी ने भेज भी दिया मुफ्ती, डॉक्टर इमरान। अच्छा मैम किस, इसमें बुक्स तो काफी हैं लेकिन मसला ये है कि इतने कम टाइम में जो है ये सारी पढ़ी जाएंगी, ये मसला है। नहीं डॉक्टर हारून, पता है मसला यही होता है कि बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन किस बुक से क्या पढ़ना है, सारी बुक्स से सब कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, ये बहुत, जो मैं ढूंढ ढूंढ के आपको बता रही होती हूँ ना, जी, ये मुझे किसी ने नहीं बताया था। ठीक है, मुझे सिर्फ नहीं मुझे ये बताया जाता था माशाल्लाह ये तो बड़ी अच्छी मैम आप। ये बुक पढ़ो, जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रही थी ये बुक पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, मतलब मुझे सिर्फ नाम बताए जाते थे। जब मैंने फिर तैयारी की तो मैंने एक एक बुक को मैं 10-12 बुक्स को देखती थी, तो उसमें से मैं 10-12 बुक्स पढ़ती थी और उसके बाद देखती थी किसमें सबसे ज्यादा अच्छा और इजी लिखा है। फिर मैं एक शॉर्ट चेक लिस्ट बनाती थी कि मुझे ये वाला टॉपिक इस बुक से पढ़ना है। इसी तरह के रेफरेंस जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ ये मेरे पास लिस्ट बनी हुई है क्योंकि मैंने ऐसे ही पढ़ा है। तो ये जो मैम है ये ना, थैंक यू मैम। ये बड़ी नेमत है, अगर मुझे किसी ने उस टाइम दिया होता ना तो मैं जो है वो उसको बहुत सारी दुआएं देती। अच्छा किसी तो और मैम को देंगे कुछ, दुआएं इंशाल्लाह। बस थैंक यू, किसी और को कुछ पूछना हो? अच्छा, एक शॉर्ट केस है डॉक्टर बाबर का, बट ही हैज सम कनेक्टिविटी इश्यूज, तो वो भी मैं ही कंडक्ट करती हूँ। अच्छा, हु इज अप फॉर द नेक्स्ट शॉर्ट केस? एनीवन? या थक गए हो? नेक्स्ट शॉर्ट केस बहुत इजी है। ये डॉक्टर मुजाहिद से ले मैम, ये सबको हिंट देते हैं, खुद शॉर्ट केस नहीं करते। जी, मैंने कहा डॉक्टर मुजाहिद से ले, ये अवेलेबल है लेकिन ये Dr. Babar, are you here or you still have connectivity issues? Hello. हाँ, Babar, are you here? Yeah. Net connection is a bit weak. अच्छा, so I'm sharing the screen. हाँ. ठीक है, just give me a minute. Dr. Mustafa, you are going to attend the last one. ओके सर। Okay.
Is it visible, Dr. Babar? Easy. Okay. Dr. Mustafa? Dr. Mustafa, you there? अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी सर, मैं ना वालिद साहब ड्राइव कर रहा हूँ सर। काइंडली सर मुझे सर एक्सक्यूज कर दीजिएगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं सर ड्राइव कर रहा हूँ सर। काइंडली सर सॉरी सर। अच्छा अच्छा, इट्स ऑलराइट भाई। ड्राइव सेफ यार, मोबाइल इस्तेमाल कम करें जी। ड्राइव के वक्त। Anyone else who wants to attend the last station? I'll do it. Okay, Dr. Atya. Okay, sir. First, I'll introduce myself to the patient, ask for consent, and then I would like ask for exposure. Ideally, for upper limb examination, we would ask the patient to remove the shirt. If not, then we will roll up the sleeves up to the extent it's possible. So first we'll examine in the neutral position. I ask the patient to put hands in the lap, and I'll give a look for any muscle wasting, any discoloration on the palmar surface, any scar marks, any muscle wasting on the forearm and upper limb. Then we ask the patient to turn the hand and look for muscle wasting on the dorsal surface, and and then we will check the radial pulses bilaterally, check the tone. Yes, check the radial pulses, and then ask the patient to do the passive movement. So I'll ask the patient to extend, to spread the fingers, then close the fingers, make a fist, then open fist. And then I'll ask the patient to turn hands for the rest surface and close the fingers so I can look at the first dorsal intershire. Then I'll ask the patient to extend wrist in the extend wrist so I can look for any radial or Parsi. Then check the tone in all three on joints, and then start the active movements. I'll check the adduction power, abduction, opposition, grip of the hand, then wrist extension, then forearm flexion, extension, then elbow adduction, abduction. Then I'll check the reflexes, bicep, tricep, and brachioradialis reflex bilaterally. Then I'll check the Hoffman bilaterally. Then I would check, after this, I'll check the pin prick in C5, C6, C7 dermatome, and then on the medial side of the forearm for T1, and then C5 on the regimental badge area, and T2 on the slightly below the axilla. Then then I'll check for the proprioception and pain and temperature bilaterally. And then on the basis of the findings, I'll go forward. I'll check for the George, if I have a hyperreflexive upper motor neuron signs, then I'll check the jaw jerk, Lermite and Sperling's. And then quickly I'll go to, check the reflexes in the lower limb, power in the lower limb, and plantars. And if there is basic cranial nerves, if I feel like there is a lesion at the CVJ junction. Then cover the vision is thank you. Can anyone hear me? You're done with the examination? Yes, I'm done. Did you check the pulse of the patient? Yes. And what about neck? I did the Sperling, I did the Lemite, I did the, yes, I did both. I forgot to inspect for any scar mark. All right. Did you check the lymph nodes of the patient? No, sir. I'm sorry, I forgot. Okay, all right. And all right, so
Dr. Mazarin, next is here. So your findings are the patient has basically weak flexion on the left side, and the Hoffman sign is negative. The patient has sensory the sensory loss on the left forearm. Okay, weak flexion and left forearm. Wrist flexion weak. Arm flexion. Okay, sir. So what about swirling? Swirling is positive. Swirling is positive. And power is intact in all myotomes. Grip is weak. Okay. Okay. So my patient has a weak arm flexion on the left side with the reduced sensation in left lateral arm. Okay. And swirling is positive. Arm is C5, C6. So, yes, ma'am. Ask please questions. Okay. So on the basis of these findings, where is your localization? Ma'am, it's in subaxial spine. Okay. And what are your differentials? Ma'am, may I know the age of the patient, please? 35. 35. So a 35-year-old with these findings. There's inside the spine. Degenerative, neoplastic, infective. Ma'am, it can be a degenerative lesion, neoplastic, or infective. Okay. What in degenerative? Ma'am, it can be a disc, since my patient has this finding of a positive swirling. So it can be a disc, or it can be a focal OPLL is not going to be common in this age group. So more likely a disc. Okay. Okay. Now, if there is the swirling sign is not positive, per se, then what differential would be more in favor? Ma'am, then it can be a neoplastic lesion. Okay. What Extradural neoplastic? Ma'am, extradural any lesion. Why More commonly a schwannoma in extradural intramedullary, because patient it can be extradural intermedullary. Okay. Sorry, extradural intermedullary more likely. No, extradural intramedullary. Yes. Are you sure? Yes, ma'am. Okay, say it again. Extradural intradural extramedullary. Okay. 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 Okay, no, why not intramedullary? Because the temperature pain and temperature sensation is intact. He doesn't have any dissociative sensory loss. Okay. So how will you investigate this case? So along with the baseline investigation, I would like to get a targeted investigation. I would like to order a MRI cervical spine with contrast. Okay. So this is your imaging. Please read the scan. MRI cervical spine with a cut at the CVJ junction and thoracic. There is this protrusion at the level of 2, 3, 4, 5,
5-6. So there is a protrusion at the level of a C5, C6, which is causing a compression on the anterior CSF column. And there is also, this is an axial sagittal MRI T2 weighted image in which there is a slight protrusion at the level of C5-6, which is causing a compression of CSF column. And on the sagittal cut, that it is causing a compression on the cord and oxidating nerve root, and also causing a lateral foraminal stenosis. Are you sure there is foraminal stenosis? No, foramen is normal. Sorry. What is this? So most likely a disc. It is a disc. No, this structure. Wait a minute. Okay, sorry, because it's vertebral artery. Okay, this vertebral artery. Okay. Yes, ma'am. Okay, so how will you manage this patient? Since the patient has a motor deficit and along with sensory deficit, first I'll consult the patient regarding the disease, and then I'll tell the patient that there is compression on your nerve root along with the cord, and you are developing a motor deficit. We can give you a conservative trial, but since there is a motor deficit, I would like to go for the surgery and significant compression. So I'll admit the patient and prepare for the surgery. Okay, what kind of surgery? Ma'am, anterior approach, anterior cervical discectomy with fixation, ECDF. Okay. Single level. Single level. Okay. So what are the steps of ACDF? Ma'am, on the day of the surgery, after shifting the patient to the OT, after the intubation, we'll put the patient in the supine position with and place a roll between at the interscapular region, and put a head in the either a Mayfield or a horseshoe headrest, and extend the neck slightly. Apply a tape over the chin to give a better exposure, and after cleaning and draping, I'll localize the level by means of a fluoroscopy and give an incision at the C5. Yes, ma'am. I mean, with the mean of fluoroscopy. I'm asking, you will localize by fluoro after draping? Yes, ma'am. You do that like, I mean, आप लोग ऐसे करते हैं institute पे अपने? And we don't localize by fluoroscopy before giving incision. We localize when we are by mean of anatomical landmarks. Okay. So what are the anatomical landmarks? C5, it's going to be the level of thyroid. C45 is thyroid, so a level below thyroid. Okay. And C6 is cricoid, so a level above cricoid, a level below thyroid, so C5, C6. Okay. You have localized, how will you proceed? After localization, I'll give I'll give the local anesthesia, then give a skin incision at the level. स्किन में तो देंगे ना. ठीक है, हम लोग नहीं देते इसलिए, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है इसलिए. ठीक है. Okay. यहाँ पे then we'll give जो है वो होती सिर्फ प्लेटिस्मा है, बाकी डीप में जो है वो थोड़ा डर होता है उसमें में चला जाए कुछ, तो हम लोग नहीं देते. ठीक. Okay, ma'am. I'll skip that. Okay, after giving a skin incision by the mean of with the help of a blade, we'll give dissection to the subcutaneous part. Then give a vertical incision I'll give a vertical incision in the platysma, and then do a blunt dissection by the mean of fingers through the muscles, and then I will identify the carotid sheath and swipe it laterally. Sorry. I'll identify the superior belly of omohyoid and redirect it medially.
And then then we will localize the level of the vertebra and apply our retractors. And at that time, I will ask the anesthesiologist to deflate the cuff slightly, and then I'll again localize my level. Before that, I'll use a bionated needle to apply in the intervertebral disc space, localized disc space. And by the help of the fluoroscopy, I'll reconfirm my level. And then by then, I'll take a bipolar cautery and I'll cauterize the prevertebral fascia. After that, I'll dissect the longissimus coli and apply a self-retaining retractor. And after that, we will open the disc space by the means of cutting into the disc space with a blade. How much longus coli will you dissect? I'll decide 3 to 5. We don't dissect the longus coli. We actually dissect the avascular plane between the longus coli. Okay. And then when they retracted by the means of retractor, 3 to 5 mm. Are you sure 3 to 5, or is it 2 to 3 mm? Now, up to 3 is safe. Okay. And then we will do the discectomy, open the disc space by the means of a 11 number blade, and then I'll use the pituitary rongers and start removing the disc. And once I have removed the disc space, remove the disc, I'll apply the Casper retractors into the vertebral blade and do the distraction so I can expose the disc space completely. I'll use the blunt nerve hook and identify if they open the posterior longitudinal ligament. And with first with the nerve hook, and then with the Casper ronger, I'll take out the take the punches and remove the posterior longitudinal ligament, and then identify, confirm if the nerve root has been completely decompressed by the means of a blunt nerve hook, and then prepare the end plates, and I'll take the graft and place in between the vertebral bodies and apply. If it's I have a zero profile device, I'll just apply the screws into the upper and lower vertebra. If not, I'll apply the interior plate and then do the closing in the reverse order. What are zero profile devices? Ma'am, it's a cage which has a screw in it, hole in it, in which we can apply a screw directly to the vertebral bodies, yes. Why is it called zero profile? Because there is no, the anterior surface of the device becomes aligned with the vertebral anterior surface of the vertebral body, and there is no we don't have to apply any anterior plate to it. Okay. What can be the post-op complications? So we have a post-op complication. Most common is dysphagia, which can be temporary or permanent. And then we can have a hoarseness of the voice or injury, deterioration of the neurological deterioration because of the injury to the nerve root or the cord. Least likely CSF leak. We can have a patient can have a wound site infection, then graft-related problems, graft fatigue, graft failure, displacement of the body, and adjacent segment disease. Okay. Dr. Atiya, you are very good, mashallah. Very good. But I mix things a lot. In my actual short case last time, I was appearing for the very first time, and during whole short case, I kept on saying, "Sir, इसको bitemporal hemianopia है, इसका right का लेफ्ट का नेजल और राइट का टेम्पोरल क्वाड्रेंट क्या है." और मुझे कह रहे बेटा फिर सोचो, मैं कह रही सर बाइटेम्पोरल है, क्योंकि इन माय माइंड आई वाज सेइंग होमोनोमस हेमियोनोपिया, एंड ही वाज जस्ट लुकिंग एट मी कि मैं क्या बोल रही हूँ. Mashallah, I mix up things a lot. No, you're very good, mashallah. And especially जो है ये जो ACDF है वो बहुत कॉमन भी है, ठीक है, और कहीं भी फिट हो सकता है. इट कैन कम इन टॉक्स, शॉर्ट केस, लॉन्ग केस, तो आप इससे बच नहीं सकते हो. तो इसको जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको एक इजी टॉपिक समझ के, या जो है ये तो हम देख रहे होते हैं, ये तो हम कर रहे होते हैं, इसको जो है स्किप कर लेते हैं. लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत कॉमन है, कहीं ना कहीं आपको आके लगेगा, तो बेहतर है कि इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ो. तो ओके मैम. हाँ, इसमें यही है, इसमें ग्रीनबर्ग में अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है. अपर लिम्ब की एग्जामिनेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो ये सारी चीजें तुम लोग पता है वैसे भी. बाकी पता नहीं डॉक्टर बाबर ने कोई और प्रेजेंटेशन बनाई है या नहीं. डॉक्टर बाबर, आर यू हियर? ही हैज सम कनेक्शन इश्यूज. Dr. Babar has some connectivity issues. So
चलिए, आई थिंक ACDF तो एक ऐसा टॉपिक है जो सबको ही आना चाहिए, तो देयर इज नथिंग न्यू जिसपे जो है कोई एक्स्ट्रा चीजें बताई जाएं। और जब वाइवा ले रही थी मैं, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स डॉक्टर अतिया जो बताई थी, दे ऑल वर लाइक जैसे बुक पूरा रिसाइट करी हो। तो आई थिंक वो वैसे ही उसमें रिवीजन हो गया है। तो एनीथिंग जो कोई पूछना चाहे, कुछ बताना चाहे इसमें। अच्छा, टुडे दे वर जस्ट 3 शॉर्ट केसेस। कल वी हैव डॉक्टर लाल रहमान, एंड ही इज अ वेरी वेरी मतलब ऐसे एग्जामिनर हैं जो आपसे इतना टफ वाइवा लेते हैं, लेकिन फिर भी आप कंफर्टेबल होते हो सर के सामने, बिकॉज ही इज वेरी पोलाइट। बट जो सर को फेस कर सकता है वो किसी भी एग्जामिनर को फेस कर सकता है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मतलब सर के पास इतना सारा पूल होता है क्वेश्चंस का कि आप हर दफा, मैं पिछली दफा तो सर को मैंने बहुत ज्यादा जो है फेस किया भी है, सर के मैंने लॉन्ग केसेस अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन हर दफा जब उसी टॉपिक पे सर दोबारा लॉन्ग केस करवाते हैं तो 10-20 दूसरी बातें जो है वो सीखने को मिलती हैं। सो आई एम श्योर पहले जिन्होंने भी सर लाल रहमान से पहले लॉन्ग केस देखे होंगे, इस दफा और भी ज्यादा अच्छी चीजें और नई चीजें सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। और हैं भी दो जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग केसेस कल हमने रखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है, ठीक है। और मैं जो पास हुई थी उनमें से एक लॉन्ग केस जो कल होगा उसमें मैं पास हुई थी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इजी लॉन्ग केस होता है उतना ज्यादा उसमें चीजें पूछते हैं। कल के जो 2 लॉन्ग केसेस हैं वो कंपैरेटिवली कॉमन और इजी हैं। और जो 2 कैंडिडेट्स कल अपेयर हो रहे हैं, एक डॉक्टर, आई थिंक डॉक्टर अतिया, कल आप हैं एक लॉन्ग केस में। ओके मैम, ठीक है, ओके मैम, आई डू इट। डॉक्टर अतिया हैं और डॉक्टर मानिक हैं। डॉक्टर मानिक, आर यू हियर? यस। Yes, ma'am. Okay, Dr. Manik, Dr. Atiya, inshallah, tomorrow we'll have 2 long cases. And who will go for the first long case? Dr. Manik, you? I think ladies first, ma'am. Okay, ladies first. Okay. Dr. Atiya. Okay, ma'am, I'll do it. Dr. Atiya was having, I think, time issues like for 5 to 6, you were saying, right? No, it's okay. No, ma'am, tomorrow I can manage. I had an issue today. Okay, okay, okay. So, That's fine. inshallah ta'ala, tomorrow the first long case will be done by Dr. Atiya from 4 to 5, and the second by Dr. Manik. ठीक है? Okay, sir, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, okay. Thank you. See you tomorrow. Thank you, ma'am.